This conference will now be recorded. Hello. Hello. Yes, sir. Audible? Audible, sir. Okay. So this was actually our last progress. Last progress. It was still here. Last progress. Okay. Last progress was still here. Just a second. Okay. So this was basically our last progress. This was our last progress. Now, the next is we have to apply linear regression on this. We have to apply. We went for exploratory data analysis. Okay. We have to apply linear regression. That means we have to see that our data must contain an independent variable and a dependent variable y, independent variable x and a dependent variable y. If we consider the date as the independent variable and dependent variable y, we are actually trying to predict the stock price. Stock price. Okay. So we need to find out a line in the data points which represents an estimated relationship between x and y. Estimated relationship between x and y. This is actually called simple linear regression, right? And we know it is actually represented by, suppose y equal to theta 0 plus theta 1 x. Theta 0 plus theta 1 x, where theta 0 represents y intercept and theta 1 represents the slope or coefficient of x. Then we have to do what? Then our goal will be to find the coefficient theta 0 and theta 1, so that the sum of the squared error, which actually represent the distance, which actually represents what does it represent? It represents the difference between each points in the data set with the predicted output value, and we need to minimize that. Got it? Okay, no problem. Now sklearn.model underscore selection. From sklearn.model underscore selection, import train underscore test underscore split. Okay, here we have the date, then we have the opening, then we have high, close, low, close, volume, and adjusted close.
and adjusted close. Okay, adjusted close. Now what would be our training input? What would be our training input? Hello, what would be the training input? Hello, everybody. Yeah, everybody is here, no? Yeah, more or less everyone is here. Here we have got multiple inputs, huh? Here we have got multiple inputs. So our task is basically we will find out. Our task is basically we will find out which input to take basically. Okay. Let's just have a look what I am doing. Just try to have a look what I am doing. From sklearn.model underscore selection import train test split. Train underscore test underscore split. So here I will pass what? I will pass data. Data. Okay, I've divided the data set into training and the testing part. Got it? Just try to understand. I'm doing something different over here. Data. Okay. I need to run from the start. Okay. Run all. From dot model underscore selection now sklearn dot linear underscore model linear regression, import linear regression. Okay, now x train np dot array train dot index, train dot index. Okay, and I will reshape it. In place of reshape, I have given -1, 1. I will tell you why I am doing all these things. Okay, and inside y train, I'm going to train close. Okay, so let's run this cell. Okay, perfect. Now you might be wondering, sir, what is train dot index? Okay, what is train dot index? First of all, you just print train. See, this is we have inside our train. Okay, and if you print test, so 1 2 3 4 5 6 7 columns we have inside train, and if you put test 1 2 3 4 5 6 7 test, but the different is here train dot shape. Okay, it's 1353,7, and if we pass test dot shape, it will be 339,7. Got it? Is this part clear to everyone? Darshan? Yeah. Sir. Yeah. Deepi Ranjan is also, yeah. Okay. Now, train dot index, see, train dot index total length is actually 1353. 1353 basically.
1350. This is actually the length. Okay, this is actually, and I'm reshaping it. I'm reshaping it in the form of -1, 1. Now again you might be wondering, sir, what is -1, 1? -1, 1 basically means first one is for row and the second one is for column. If I write -1, that I don't care about row. Row will be automatically made by the model. It will be automatically made, and column only one column. Row will be automatically made, but column will be only one, and row it will take according to its choice. Getting the point? Can you print extend so that we can see what is the difference? Yeah. I printed extend. See. Sure. What is the shape of extend dot shape if we print extend dot shape? One column, but row, row it will take according to its choice. Row it will automatically make. That's why in place of row I have given -1, means I don't care about the row, but column, one column will be made. One column. One input. Got it? Now clear why I'm doing this? Okay, very interesting. Now see, try to understand. Inside the model, I will do what? I will create the model. Now I need to train the model. So model dot fit. Y underscore. So the model is trained. See, I'm getting the output that my model is trained. The model is trained. That's it. Perfect. That's it. See, just have a look of till here. If you face any problem, anything, you just tell. No problem, na? No. Print slope model dot what it is 0.17. Okay. So what does it showing? Basically, it is printing. Which one? The slope. Which one? This one, na? In line number 21. Yes, sir. The value of slope and intercept. That is means M and C. Exactly. Okay. Slope and intercept. Now you can see over here that I'm getting the slope as 0.17, right? I'm getting the slope as 0.17. What does this mean? This means, what does this mean? Can anybody tell me what does this mean? If the slope is 0.17, what does it mean? If the slope is 0.1, it tells us that with every 1 unit increase in date, every 1 unit increase in date, the closing price increases by 0.17. If it is in rupees, then 0.17 rupees. If it is in dollar, then 0.17 dollar. Getting the point? So once, can you repeat once more? I'm writing over here. Means with 1 unit increase in the date, the closing price increases
increases by 0.17, it will be dollar, because Tesla na, so they actually take a dollar or pound, something like that. Okay, getting the point? $17 or 17 pound in whatever is the currency. That's Yes, I got it. got it. So this is basically the thing. These are very simple to understand. Now what I have to do, I have to print the regression line basically, and I have to see. Okay, I have to print the regression line. Okay, and I have to see. If I print the regression line now, I have to see before prediction what is actually my regression line telling to me. Okay, or is everything going in the correct format or not? So how I plotted the figure? Something like this. Figure I plotted something like this. Copy paste it over here. Okay. PLT.title linear regression okay. PLT.scatter, I will pass X train comma Y train. Got it? X train comma Y train. Whether it will be date, price and date. Where? So linear regression, price and date. Basically, I think so it will be. Say same Title. time, same thing. Okay, okay, no problem. You are telling date. Okay, let's get for date. This is the actual price. Training is the actual price, na? And I want a line plot. So X underscore train model dot predict X train. Equal to, suppose I give B, blue. Predicted price. Show. Run this. Something like this I'm getting. No, not blue. Red. See. Now just have a look. Yes, sir, got it. Got it? So this is our regression line. This is our regression line. Okay, getting our regression line. Very good. No problem with this. So this is our regression line. Now, since this is actually the regression line, now what we have to do, we have to go for our prediction also. Na? Graph is okay. Since data science visualization is okay. Okay, bhai, I'm getting this perfect line. Okay, no problem. Now let's do one thing. Again, same thing now, -1, 1. That we have done for Yes, I got. Same for train and test. y underscore pred equal to got it? Run this. Getting the predictions. Getting the prediction. Okay, I'm getting the prediction.
getting the prediction. Okay, perfect. Chalo. Yes, sir. Getting the prediction. Yeah, getting the prediction. Now, after getting the prediction also, what to say? This is actually what to say means a bit. So how to check the means first we have to check the accuracy and the MSc score and all that. Yes, that we will check. Okay, first let us give the prediction. Okay, getting the point, Darshan. Okay, sir. So this is basically done. Okay, चलो ये हमारा काम यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया. थोड़ा सा सोचने दीजिए हमको प्लीज. हाँ, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है. ओके, prediction. We have the prediction inside YPRED, right? We have the prediction inside YPRED. This is basically the prediction that I am giving basically. Okay, and we are actually predicting on this X test. Let's do one thing. Remember, मैंने एक linear regression का आपका प्रोग्राम करवाया था. Linear regression or we can say anything open करते हैं पहले इसमें. I will copy this. Okay. This I will paste it over here. Actual we are giving a prediction on this, right? Actual हमारा क्या है? डेटा के अंदर हमारा डेटा सेट था ना, डेटा. यस, तो एक्चुअल वैल्यू जो है हमारा डेटा टू गोस. और प्रेडिक्शन जो है हमारा वो कहाँ है? y_pred. y_pred. ठीक है. राइट नाउ के लिए हम लोग ये एरर को भी फिलहाल रिमूव करते हैं. वेट, टेलिंग वैल्यू एरर. Parallel 339 does not match with index 1692. Okay. सर आपका तो डेटा क्लोज में 1600 डेटा है और यहाँ पे तो सर वाई प्रेडिक्ट में आपका तो कम है लेंथ, तो ऑब्वियसली सर माइनस वो तो प्रेड होगा नहीं. नो प्रॉब्लम. तो हम लोग एक काम करते हैं ना, यहाँ वाई टेस्ट दे देते हैं. व्हाट इज द, हाँ सर वाई टेस्ट ही देना पड़ेगा. आइदर वाई ट्रेन देना, वाई ट्रेन नहीं, वाई ट्रेन देने से भी नहीं होगा सर, वाई टेस्ट ही देना होगा. ओके, चलिए. So this is actually our prediction that we are getting. ये हमारा prediction है. देखिए, see, this is actually the prediction that we are getting basically. सर बहुत मींस वी कैन से द फ्लक्चुएट कर रहा है बिकॉज़ 32 एक्चुअल है, प्रेडिक्ट आ रहा है 91. हाँ, फ्लक्चुएट तो करेगा ही. तो बहुत ज्यादा है, मतलब अगर हम लोग इसको तो और मिनिमाइज करना पड़ेगा. यस, लीनियर रिग्रेशन है ना. पर सर ग्रेडियंट डिसेंट से तो हम लोग इसको कम कर सकते हैं. कम कर सकते हैं. एरर देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है. एरर समथिंग हमारा ऐसा कुछ आ रहा है. देखिए, जस्ट हैव अ लुक. दिस इज बेसिकली आवर एरर. ओके, दिस इज बेसिकली आवर एरर. ओके, दिस इज द एक्चुअल, दिस इज द प्रेडिक्शन एंड दिस इज बेसिकली द एरर. कहीं एरर देखिए बहुत कम है. हाँ सर, एरर बट मैक्सिमम जगह में ज्यादा है. यस.
So y test, it's around 43. तो 0 to 10 होना चाहिए RMSC, right? And reduction 42. Okay. Okay, so it's not giving much more than this. Okay, so this is basically that's it. इसको यहाँ पर अभी रखते हैं इंटैक्ट, इसको यहाँ पर इंटैक्ट रखते हैं. ग्रेडियंट डिसेंट का कोड हम लोग कॉपी करते हैं. ओके, let's copy the gradient descent code. I'm not wasting time in all these things. Okay, 2000. अच्छा, यहाँ पर बोला जा रहा है x, बोला जा रहा है x. So what is actually stored inside our x? X contains the features, means the column, right? तो वहां पे मतलब X ट्रेन होगा क्या या X टेस्ट होगा? बिकॉज आप दोनों में हम लोग किए. Okay. हम लोग ऐसे अलग से डिवाइड नहीं किए हैं. पहले हम लोग सब मतलब कॉलम और फीचर्स डिवाइड नहीं किए. हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद हम लोग X ट्रेन और अलग अलग किए. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है. तो सर उसमें तो फिर X ट्रेन डालना पड़ेगा. यहाँ पर बोल रहे हैं ना, हाँ सही, यहाँ पे तो X वर्क नहीं करेगा ना. X ट्रेन ना, X ट्रेन और Y ट्रेन ही तो डालना पड़ेगा. X train, right? And in place of Y, we are going to give Y ट्रेन. So Y स्मॉल है शायद. okay. Y train. Okay, so why I'm giving Y सर train? Okay. और एक तो सर होगा, और एक तो होगा सर फ्लोट यहाँ पे X ट्रेन. अच्छा, एक देखिए कहीं X लिखा, हाँ. Exception. Data must be 1D. Oh, X train is a data frame, sir. Where is the 1D data? We converted it, I think. सर रीशेप किए थे. X train ही तो था सर एरे में. It's a 2D. सर 2D कैसे? ओ सर सारा नहीं सर, सारा रोज और एक कॉलम्स है तो ये सर 2D कैसे हुआ X ट्रेन? It has got 13,065 rows and 1 column, right? ये 2D format. Yes sir. Yeah, it's 2D format. 2D format. मैं दिखा देता हूँ कैसे ये 2D में है. देखिएगा, पहले से स्टार्टिंग से ही देखिएगा. डबल कॉलम देखिए यहाँ पर. Oh yes sir, yes. It's a 2D. हाँ. सर इसको तो फिर रीशेप करना पड़ेगा 1D में वापस. Just a second. ये हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो गया था. कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए. डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम लोग सोल्यूशन इसका जरूर निकालेंगे. इस तरह के प्रॉब्लम्स कोई बड़ी बात नहीं है.
अच्छा रुकिए, पहले मुझे यहाँ पर कंपैरिजन को करने दीजिए, यहाँ पर कंपैरिजन करने दो। ओके, फर्स्ट लेट मी डू द कंपैरिजन। ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग बाद में आ रहे हैं, अभी मुझे कंपैरिजन करने दो पहले। प्रेडिक्शन बार ax equal to ax। ओके, नाउ plt डॉट टाइटल देना बहुत ज्यादा जरूरत है, predicted versus actual, right? Sure. अच्छा, एक्स पे हम लोगों ने लिया है डेट को, यहाँ पर दो ग्राफ अपने को प्लॉट करना है, टू ग्राफ, टू, समझ पा रहे हैं? यहाँ पर बार प्लॉट देना है। अच्छा, हमारा प्रेडिक्शन कहाँ आया है? प्रेडिक्शन यहाँ आया है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। कोई बात df sample dot plot कैसे होगा? प्लॉट तो plt dot plot ही होगा। df underscore sample dot plot कैसे होगा? कि एक सेकंड दर्शन, मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। df underscore sample में अगर हम लोगों ने स्टोर किया है, if I store df inside df underscore sample, then I can see the actual and the predicted value. Okay, actual and the predicted value. Okay, actual and the predicted value. Actual is our y test and predicted is actually y rate. Okay, actual means the closing. What is actually the closing? Wait, 23. The closing is 23 ना, यहाँ पे हमारा okay, actual and prediction. Date,
डेटा के अंदर से हमको डेट लेना पड़ेगा, डेटा के पास से हमको लेना पड़ेगा डेट। ओ सर आप x इक्वल्स टू df अंडरस्कोर सैंपल आप वो लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू df अंडरस्कोर सैंपल, और आपका जो आया अगर आपको डेट चाहिए तो। चलो ठीक है, सबसे पहले मुझे y पर जो चाहिए वो चाहिए मेरा एक्चुअल, I require the actual value, okay, and here I have the prediction. Getting the point? I want the actual, okay, and on the x-axis I want the date. On the x-axis I want the date. So what is actually the sample dot shape? What is the shape? (423), right? 423 है ना इसका शेप। कोई ना कोई मिस्टेक तो हुआ है जरूर। नहीं सर, आई थिंक सो सर हो जाएगा शायद। हाँ बोलिए इसी क्या में करना होगा सर x इक्वल्स टू आप आपका, क्योंकि वो टेस्ट वैल्यू में आया है आपका 423 डाटा इज अंडर द टेस्ट वैल्यू, आप x अंडरस्कोर टेस्ट लिखिए। सर x अंडरस्कोर टेस्ट, बिकॉज डेट आपका df सैंपल में है ही नहीं, आपका x अंडरस्कोर टेस्ट में है डेट, और उसमें आप डेट दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में डेट, स्क्वायर ब्रैकेट में डेट, और y इक्वल्स टू सर यहाँ पे आप df अंडरस्कोर सैंपल लीजिए, y इक्वल्स टू df अंडरस्कोर सैंपल, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा, एक्चुअल कॉमा प्रेडिक्शन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा, वरना आपका एरर भी आ जाएगा। df y इक्वल्स आप इसमें लेंगे, ये नहीं सर, नहीं सर, df सैंपल फिर स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे आप x टेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिखे हैं तो df सैंपल स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअल कॉमा प्रेडिक्शन। राइट। और सर आपका वहां पे 10 है, आपका वहां पे 10 आई थिंक सो साइज, रिमूव कर दो ना। ये सर आप साइज शायद हो जाए, पता नहीं सर, शायद कैसे होगा ये? सर यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है? इंडेक्स एरर। यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, मतलब डायरेक्टली जो कुछ भी कोडिंग लिखेंगे तो रन नहीं होगा ना, राइट। वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है, वी कैन गेट स्टक इन बिटवीन, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स आते हैं, लेट्स सी कब तक सस्टेन करता है प्रॉब्लम। Let me first check for my x test. What we have, where we have test, train and test, it is here, okay. Inside x test, this is actually the train model coefficient. Here we have recept, basically here we have recept it. After reshaping inside y test, we have actually taken the close from the test value, okay, and then we give one prediction, model dot predict, okay, model dot predict, okay, perfect. That's it. Still here it's okay.
ओके चलिए यहाँ पर तक तो ठीक है. In place of this, wait, we have the actual data inside data, right? Nothing is null, na? Nothing is null. We don't have any null value. Suppose what is the shape? 1692, right? 1692 is the shape. Let's take a variable r. numpy imported है हमारा, numpy imported है. np.random 1692 and will continue around 20 random numbers. Let me see again. It's telling what np.random which takes 2 positional arguments. Random takes 1 positional argument, 2 were given. Okay, random state. Okay, size equal to 20 again. Sure. RANDINT rand int chalo. Random means 20. I've taken some random values, right? I've taken 20 random values. Now I'll make use of this random sample. Okay, now I'll make use of this df sample. Where is this df sample? I deleted the row or what? Delete कर दिया क्या मैंने? df sample equal to data. डेटा के अंदर से हम लोग बेसिकली क्या लेंगे? What we are going to take? Data. From the data we are going to take index. Okay, from data we are going to take index basically. So what we are going to do, data dot index dot is in r. ये रन कर जाए तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? What I did here I just tried to generate 20 random numbers, and after that I actually tried to select row number equal to that random number. Getting the point? Got it. Got it now? This I did over here. Okay. Now अभी आया डेट तो फिर वही डेट आ गया 92 92 3 4 5.
So is in R. If it is in R, then 20. No. So let me see df simple dot shape. Iska shape kitna ho raha? I think it will be 19,7. Size equal 20, so 21. अभी 21 दे रहा है, तो इधर मैंने 20 जब किया था तो फिर 20 क्यों नहीं दे रहा था? हाँ 20,7. Now it's okay. 20,7. Okay, 20,7 is the same. And if I just go for, then it's giving me date, then open, then high, then low, then close, then volume, then adjusted close. Okay, so it's giving me this, but where is actually the main thing is that I need to now go for the graph. Where is the graph? The graph here I have taken figure and then subplot. On the x-axis I have taken the date. Okay, on the x-axis I actually took the date, isn't it? So on the x-axis I took the date, and on the y-axis I have took the values. Ax figure.ax not an index, predictions, prediction, predicted value. Where is my predicted value? Just find out the predicted value. Here is the predicted value basically. Okay, I don't need it. It's basically creating a lot of problem. That's it. So Sir. Yeah, tell me this. सर आप ये जो एक्चुअल और प्रेडिक्शन, ये सर आप मतलब आप जो स्टोर किए हैं सर, वो तो मींस आप df अंडरस्कोर सैंपल में स्टोर किए, राइट सर? ऊपर में अब आप मतलब स्क्रॉल अप करिए सर, स्टोर किए, बट आप सर वापस आप जब df अंडरस्कोर सैंपल लिख रहे हैं सर, वो तो ओवरराइड हो गया वो सर। जैसे आपका देख रहा है df अंडरस्कोर सैंपल तो अब दिखा नहीं रहे। ओके, तो यहाँ पर एक सर df आप यहाँ पर df अंडरस्कोर, हाँ यहाँ पे सर आप कुछ और दीजिए एक बार शायद। ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मैं df ही दे देता हूँ, वो ओवरराइट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक वेरिएबल को तो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। हाँ सर वो हो रहा है, पर वो नहीं सर, आपको बेसिकली डेट, एक्चुअल और प्रेडिक्शन का ग्राफ चाहिए। मतलब आपको तीनों को फिर एक ही टेबल में रखना होगा, तभी सर के सर आपका होगा अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपका तीनों एक ही टेबल में होगा या एक ही डेटा फ्रेम में होगा। वेट दर्शन, हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहे हैं। Actual, predicted, okay, here also we are getting, I think, actual, predicted and error, isn't it? I want the predicted value, okay, I want the actual value, and I want the date. This is my actual photo, right? Okay, give me some time. Let me see from the beginning. Let me see from here.
DF. Okay. Take a break. Take a break. My mind is not working right now. Okay, take a break. Okay, Darshan, everybody, please take a break of 5 minutes. Yes. Okay. Yeah, yeah. Okay.
Oh, jag är base 100. Men jag tror att jag ser väl men jag var inte här men jag kan se det läge. क्या हुआ वापस सारे वीरेस में तो साली हो रहे Hello, 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 hello. Yes, Is it audible? yes sir we are audible Audible, no? Yeah, wait. yes sir Yeah, wait. I am looking into this. Okay, don't. Yeah, nobody will leave, huh? I just give me a few minutes. I have made some mistake. I know. Yeah, wait just a second. Hmm. Yes, so here we have the actual data. Okay, now सर मेरा प्लॉट हो चुका वो वाला चीज हो गया हाँ सर
but सर मींस ग्राफ थोड़ा मतलब वो फिगर साइज एडजस्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ी ग्राफ थोड़ा सा 332 डेटास का है, सो मींस इसलिए थोड़ा सा वो बताइए, देखिए कंजेस्टेड है। देखिए कितना इजीली आपने कर दिया, बताइए। सर हम हम अभी ये तक वाला किए मतलब तो एटलीस्ट सीख रहे हो आप, देखिए। सर हम तो ये वाला कोड लिखे एक्चुअली हम सर आई हैव डन, हम टेस्ट ही में सर हम एक्चुअल और प्रेडिक्टेड जो मेरा कॉलम था df अंडरस्कोर सैंपल का, वो टेस्ट में मेरा जो टेस्ट वाला डेटा सेट था उसमें स्टोर कर दिए, फिर हम टेस्ट से प्लॉट किए। डेटा बहुत अच्छा है, ये आपने अच्छा किया है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, रुकिए। डेटा फ्रेम, डेटा column equal to close. चलिए, so I created one new data frame with only the closed column. Okay, a new data frame with only the closed column. Got it? Now this is done. Getting the point? And now I will do one thing. Reset index. Okay, run this. Data equal to data dot reset index, or let's take one variable df equal to data dot reset index. Okay, so df equal to data dot reset index. Why we are actually resetting the index? Here, reset index column, or we are resetting the index column so that we have integers to represent the time. Okay, basically here I just wrote data dot head na, and here when I write df dot head, so if I run this, so as you can see, we have got index. See, we have got index. Getting the point? We have got index. So this is basically the concept, basically. Okay, this is basically the concept that this is what I try to do. What I try to do. Okay, what I try to do. Right, getting the point. But still, here, date is not present still. Okay, still here, date is basically not present. Date is basically not present.
it's saying date equal to NN. Okay, now in place of reset index, we'll set the index. We will set the index basically. I'll set the index as date. See, now it's working. Now it will work. Okay, now it's going to work basically. Okay, getting the point? Now I have a right here reset index basically. Reset index. Data dot shape, it's 1692 and 2 columns. Okay, 1692 and 2 columns. Okay, and now I will check whether it has got any null value or not. It has got any null value or not. Is that got any null values? False. It's haven't got any null values. Here is the information, here is the description. Okay, here I have plotted the graphs. Leave as it is. Okay, and here I just divided the data set. Here I divided the data set basically. So now it's place of data. I will do one thing. I will not take data anywhere, everywhere. I will take df. I will take here df. Okay, df. So df. Run this. Okay, df. Okay, perfect. Chalo, df. Now when we're splitting the data, when I was splitting the data, I have passed what? I have passed here data. So I'll pass here df. Okay, that's it. And this is our new slope, and this is the y-intercept. Okay, and here if I just run this, I'm getting this regression line, and if I run this, that's it. This is the metric. क्वेश्चन है Yes, सर आपका सर Crystal. डीएफ में तो सर आपका डीएफ में सर क्या क्या है फिर आपका डीएफ में मींस 2 कॉलम्स है राइट 2 columns है. The date and this is actually the closing price. Okay, तो सर खाली उसी 2 से मतलब प्रेडिक्ट करने का वो 2 ही खाली फीचर्स लेके प्रेडिक्ट क्यों होगा बिकॉज़ हम लोग के पास ट्रिपल लीनियर रिग्रेशन में एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा. सो हमारा डेट को ऐसे इनपुट लेंगे और आउटपुट हम अपना क्लोज को करेंगे. अच्छा ठीक है सर. Okay, so this is done. Perfect. Now wait. मैंने बोला ना थोड़ा सा मुझे आप टाइम दो. These are bit confusing a bit. Okay, but इतना भी ज्यादा confusing नहीं है. ठीक है, इतना भी ज्यादा confusing नहीं है. तो डेटा सेट को यहाँ से मैं रैंडम स्टेट को हटा देता हूँ पहले. ठीक है, ये रैंडम स्टेट का जरूरत नहीं. अब इसको मैं 20 कर दिया बेसिकली. रन करते हैं इसको. ठीक है, now it's going to work. So on X train and Y train, we have basically receipt. Okay, and here इसको अगर मैं run कराता हूँ, so model is trained
and after our model gets trained, okay, then we will find out the y-intercept and the slope, basically y-intercept and the slope. Okay, and here I'm getting the regression line. Here I'm getting the regression line. Okay, this is my regression line. Perfect. After I get my regression line, okay, after evaluating the model, after I get my regression line, then I did what? Then I, for the testing purpose, basically I use ypred. With ypred, I am actually run this. Okay, with ypred, let me run this cell. So run this. Okay, that's it. So model.predict x test. Okay, perfect. That's it. Done. Perfect. Now let me see the shape of DF over here. Okay, this is basically the shape of DF. Okay, this is basically the shape of DF. Now I have generated some random number to run this. Okay, so the error is very less now. Now you see, I think now it's perfect. Nothing. So I use this. Now I will take it 1692. So here is 1692. Okay, and here wait 1692. I've taken 20 random points. And after taking 20 random points, what I have to do? Just a second. I've taken 20 random points. Okay, now if I just take a variable df underscore sample and df underscore sample, now if I run this, okay, this is the date and this is basically the closing one. Here again I'm getting the date and the closing one. Now now again the thing is that I'm not getting my prediction. The closing is okay, but I need the prediction also, isn't it? This one I need. This one I need. Okay, not a big deal. No problem. And this is not a very big deal. Okay. Wait. I have the date, I have the closing, but I don't have the prediction, isn't it? Let me see my graph. Skill under model underscore selection import print test splitted the data set into training and the testing part. Model created linear regression xtrain comma y train. Model.y intercept, taken the figure. Okay, the x test we will actually reshaping the model. After reshaping the model, we give the prediction.
The prediction is basically on x underscore test. X underscore test. Okay. Given on x test. The prediction is given on x test. Okay. This is where we have trained actually the model. After training the model, prediction, this is actually the prediction on x train. Okay. Now here reshape. Prediction x test. Y underscore pred. Got the output. Getting the output. Yes, getting the output. Okay. Y underscore pred. In the sample pd.data frame, I have the actual answer, I have the predicted answer, and here is my error. Here is my error 3 4 basically got. Okay, it's something like this. Okay, now this is actually the mean squared error. This is the mean squared error. Okay, root mean squared error. No null value is there. I don't require this. And if I just run this, I pass this inside a data frame, and it's perfect. Wait. This is basically the error. I'm just deleting these parts. Just a second. Now we have the data frame. Okay. We have the data frame, and after we have the data frame, see, I got the date. I just added the date over here. Okay, this is my mean squared error, and now I will go for the plot. Okay, I will go for the plot. Now I will go for the plot. Hope so there is no issue with the plot right now. So what you have added basically? Yeah, I added this one. See, I had added inside this dictionary date colon test date. I added this. Okay, I got the date. On The which actual, date it was predicting, that date only you got. yeah. Okay, now run this. Actual कर दो यहाँ पर. Actual and prediction. So now it will come. Wait, just a second. What happened? Oh my God! So wait. Dot
head 20, huh? Awesome. This was what I wanted. See, मैंने बोला ना मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दीजिए. I will do it. See, मुझे लगता है इस पे और ग्रेडियंट डिसेंट लगाने की कोई जरूरत भी है. So finally it's done. Just have a look. This was what I wanted. Getting the point? यहाँ से यही कोड को उठा लेते हैं फिर से वापस. पहले देख लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं इसको मॉडिफाई करूंगा. First of all, have a look at this. Yes, sir. Got it. Got it? Na? No problem, na? No, sir. Okay. So simple as that. Okay, we don't require anything extra. Okay, and a simple, let's go for just modified it a bit. This is the linear regression line. See, this is the regression line. That's it. I got the regression. I plotted the regression line again. I plotted the regression line again. That's it. Yes. So can you scroll down? Okay, just a second. So can you scroll down, sir? Down. Sir, graph. Yeah, graph. Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. Okay, so here we have simply done, completed. Okay, this was what I was actually looking for. I was actually looking for this. Okay, I was actually looking for this. Right? So we have successfully completed our first project. Any doubt? I know I took a lot of time, but I was there was no other way. Okay, I tried my best to solve it as fast as possible. Okay, getting the point. But still, it consumed a lot of time. But yeah, no problem. It's done. Still, it's done. Sir, can you share this IPYNB file? Each and everything I will share. This is the project. Yes, sir. Okay, this is the project. Why will I not share? Okay, so explained variance ratio. See, explained variance ratio. I just wrote explained variance ratio. So this is basically around a 80%. Explained variance score is what? Variance ratio. Explained variance ratio. Okay, this explained variance ratio means we cannot find out the accuracy over here and a percentage. Yes, sir. We cannot find accuracy because it is a regression. Yeah, linear regression. So we are actually find the basically we find the variation. Means what is the variation we are getting in actual and prediction. Exactly. Variance ratio means estimated target value, we can say. Means, or we can say the score of all the output are averaged. That's it. Okay, sir. Getting the point. So 80% near about the model is accurate. What is the harm in that? What is the harm in that? Isn't it? So test size is also 20%. That's it. If I give a random state, will it matter? Will it matter? Let's see. It's mattering 80%, 80, 82. That's it. Got it? Any doubt? Hello? Sir, no doubt. No problem, no? So I'm sharing this IPYN. No doubt, sir. No doubt, no? Yeah. Okay. Sir, can you share the JS class 8 and that one also, Titanic? Yeah, I'm sharing. Wait. GIS class 8, no? Wait.
just a second. I'm sharing each and everything. GIS class 8. GIS class 8. Okay. This I shared. After that, I need to share the Titanic train and Titanic test. Titanic train and Titanic test. Titanic test and Titanic train. Okay. Now, the logistic regression stock price prediction. Logistic regression stock price prediction. I have shared you each and everything. Okay. I took time, but I told that give me some time, I will complete it. ठीक है, ये इतना जल्दी कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने भी मेरा हेल्प किया, बहुत दर्शन ने हेल्प किया, रोहित ने हेल्प किया, ठीक है, दीपी रंजन ने हेल्प किया, सबने हेल्प किया, आप लोगों ने हेल्प किया। दैट्स व्हाई विथ योर हेल्प आई कंप्लीटेड दिस। आई एम नॉट टेलिंग दैट आई हैव कंप्लीटेड इट विद अलोन, विथ ऑल योर हेल्प आई कंप्लीटेड दिस। ठीक है, तो देखिए यहां से लेकिन हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। इफ द प्रोजेक्ट had got in a rhythm और 5 10 15 15 20 मिनट में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया रहता है, तो that would not be a genuine fact. Here we got an error, we solved the error, and I think we did the best, man. Sir. Okay, we did best, right? Yes, sir. Okay, so this is actually excellent one. Excellent, perfect. So I have shared the project also, and what next? अभी क्या जानना है आप लोगों को, बोलिए। Darshan, Rohit, Deepi Ranjan, tell me. Deepi Ranjan is telling as you wish, sir. Okay, okay, okay. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दीपी रंजन, एकदम आप टेंशन मत लो, देखता हूँ क्या कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, दर्शन ने मुझे कहा सर थोड़ा एनोमली डिटेक्शन के बारे में बता दीजिए। टेल अस समथिंग अबाउट एनोमली डिटेक्शन बेसिकली, राइट दर्शन? यू आर क्यूरियस अबाउट एनोमली डिटेक्शन, इजंट इट? ओके, सो इसका प्रैक्टिकल तो देखते हैं आज कहां तक पॉसिबल हो पाता है। मतलब आउटलेयर्स, आउटलायर्स एनोमली डिटेक्शन ना? हाँ सर, आउटलेयर्स होता क्या है पता है सर, और कैसे डिटेक्ट होता है वो पता है। रिमूव कैसे होता है उसका मेरे को सर एक ही मेथड मींस मतलब हमको आता है, हम देखे थे स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब स्टैंडर्ड स्केलर से करके हम लोग उसको कुछ हद तक, मतलब पूरी नहीं, बट अब परसेंटेज हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और आउटलेयर्स बेसिकली होता है अगर कोई एक रेंज है लाइक 0 to 10, एक रेंज का अगर दिया हुआ हम लोग का, सपोज एक लिस्ट है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है, और एक अलग से सपोज 100 दिया है, तो वो 100 इज आउटलेयर बिकॉज वो एक रेंज में फिट नहीं होता। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे बेसिकली आपने जो बोला, ओके, दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज आउटलायर, राइट? सी, एनोमली डिटेक्शन आउटलायर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं आज, ठीक है? कैन यू सी द पीपीटी? Yes, sir. You can see the PPT, na? Yeah. Okay. So, anomaly detection.
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एनोमली डिटेक्शन का एक एग्जांपल दिया मैंने, एयरक्राफ्ट इंजन फीचर x1 रिप्रेजेंट्स हीट जनरेटेड, x2 वाइब्रेशन इंटेंसिटी, समथिंग लाइक दैट, and the data set actually contains these features x1 x2 till xm. x1 represents a heat and x2 represents vibration. जितना ज्यादा heat उतना ज्यादा vibration. So these are okay, these are okay. This means what to say, means red, this means maroon crosses है ना, maroon रंग का crosses है ना, this crosses are okay, and inside this maroon cross one green cross there, that is also okay. But can you see on there is one green cross at the end, there is one green cross in the end, can you see that? सर नेक्स्ट स्लाइड नहीं दिख रहा है सर मेरे को, तो फर्स्ट स्लाइड ही। Why it's like that? Wait, I'm again sharing. Anomaly. Wait. Just a second. Now is it visible? Yes sir, yes sir. It is visible ना? Yeah. So this is basically the problem of go to meeting. हो जाता है कभी कभार, काफी देर तक चलता है तो हैंग हो जाता है. Okay. So here as you can see that maroon crosses are basically what? They are okay, and one green cross inside the maroon cross, that is also okay. That is also perfect within the data set. But can you see there is one green cross lying at the end? That is basically an anomaly. Okay, that is basically anomaly. So what is actually anomaly and what is anomaly detection? See, anomaly detection basically नाम से क्या पता Hello sir, sound is not coming. Yeah, hello. Audible? Yes sir, now come. Yes sir. Yeah, this go-to meeting is causing a lot of problem basically. Yeah, so that's what. So anomaly detection is actually the technique of identifying rare events or observations. Okay, means they can raise actually suspicions in an observation. Like the first thing I will tell, anomalous behavior. Simple, a credit card fraud detection. सब कार्ड का जो ट्रांजैक्शन है जेन्युइन है, एक ट्रांजैक्शन जो हो गया वो फ्रॉड हो गया, ठीक है, तो इट विल कॉज अ सस्पिशन like failing machines in a server, or we can, I give an example like एक cyber security attack हुआ कुछ. Okay, so all these are what? These are basically examples of anomalous behavior. Okay, anomalous behavior, right? Now anomalous behavior, getting the point? Now just have a look. Density estimation. See here, this side one x1 is actually what? It's an anomaly. It's anomalous. Just have a look. So basically, how to use machine learning for anomalous detection? This is the most important task. How to use machines, or in machine learning, how we basically
go for anomaly detection. I told you basically what is anomaly detection in a data mining or machine learning or whatever. Okay, the name anomaly basically means outlier. What does it mean? Outlier. So here we are doing what? With the help of anomaly detection, we are actually stepping in data mining to identify the data points or observation that deviates from a normal distribution or that deviates from a normal behavior. Okay, so anomalous data can indicate critical incidents, like I told, credit card fraud detection, okay, or a cyber security attack. Everything is going perfect, एक जगह attack हो चुका है. Okay, and this basically makes a change in the business. Getting the point? So machine learning is actually doing a progress in automating anomaly detection. Anomaly detection basically. So within a data set, as you can see on this screen, okay, just have this, the center में देखिए कितना ज्यादा क्लस्टर है, साइड में देखिए फिर भी ठीक है, लेकिन ये देखिए ये जो एक्स है ये एकदम साइड में है, दैट ग्रीन एक्स anomaly. Okay, so within the data set we can see data patterns are represented basically, and suddenly an unexpected change with this green cross is identified, and this confirms that this is basically considered as an anomaly, or anomaly is basically the deviation from the actual business, deviation from the actual business, or we can say unusual condition, unusual condition. Getting the point? Right? Clear? No problem? Now, if we consider time series, anomaly detection, this is basically, see, they have written, okay, anomaly detection, fraud detection, model actually learns from data, identify unusual users by checking. Okay, so in manufacturing industry, monitoring computers in a data center. Okay, anomaly. सब कुछ ठीक है, अचानक एक कंप्यूटर में खराबी निकल गया, anomaly. Okay. For anomaly detection, we need to know about Gaussian distribution. Gaussian distribution. Okay, this is also a method. Okay, Gaussian distribution. What is Gaussian normally distribution? As you can see on the screen, X belongs to R. If X is distributed Gaussian with mean micron, variance will be sigma square, something like that. Something like this. Now, first of all, I would like to explain few things to you. Normal distribution. Normal distribution is also known as Gaussian distribution, and this is basically what? This is basically a probabilistic distribution. It is a probabilistic distribution. Okay, that is which shows the mean. Okay, it shows the mean, and it also shows that data near the mean are more frequent in occurrence than data far away from the mean. See here, just look at this graph. Data near the mean is basically what? Near the mean are more frequent in occurrence than data far away from the mean. Getting the point? So whenever you will see a graph of a normal distribution, or Gaussian distribution, you can say, always it will feel like, it will appear like there is a bell inverted or bell curve. See, bell curve. A bell is inverted. See, और टंग 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 करके बेल बजाते हैं ना, टिंग टंग 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 करके, वो देखिए वो बेल इन्वर्टेड. सी, बेल कर्व. Okay, so we can say, can we say that a normal distribution is the proper term for probability bell curve, right? And as Darshan said that, sir, we can do it with the use of a standard scalar. That means in a normal distribution, the mean is 0 and the standard deviation is 1, right?
Getting the point? No problem. Now normal distribution is basically the most common type of distributions in stock market analysis, statistical analysis, all these things. So the normal distribution has two parameters. Okay, a normal distribution has basically two parameters. It has two parameters. Okay, the mean and the standard deviation. Basically, for a normal distribution, suppose I'm telling one thing, 68% of the observation are within one standard deviation 1 of the mean, and 95% are basically within 2 standard deviation, right? And 99.7% are within 3 standard deviation. Getting the point? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो रहा है? थोड़ा मुश्किल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा मुश्किल है ये। यहाँ जो है, यहाँ पर ये बेसिकली ये पीपीटी से समझना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर तो बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा था बेसिकली, राइट? I will explain all these things using some more examples tomorrow. Okay, I'm just giving you an overview. Okay, I'm just giving you an overview. Again I will come to this. Okay, अच्छा, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब मालूम है ना आप लोगों को? स्क्यू, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, रिमेंबर? स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मीडियन, मोड। सर लेफ्ट स्क्यू, राइट स्क्यू, मतलब लेफ्ट साइड में ज्यादा डेटा या राइट साइड में अगर एक साथ ज्यादा डेटा चले जाता, वही चीज। Exactly. You do one thing. Yes, you are correct. Everybody, you are correct. Okay, Darshan, you are 100% correct. आप लोग थोड़ा ये चैप्टर को आज देख लो, स्टैटिस्टिक्स का ये चैप्टर को थोड़ा देख लो, ठीक है? सबसे पहले कल जो टॉपिक जो होगा वो मैं यही पकड़ूंगा, ये दिस एनोमली डिटेक्शन, और इसके ऊपर एक एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा। गेटिंग द पॉइंट? कोई ट्यूटोरियल है सर ये एनोमली का या ऐसा कोई चैप्टर का जिसमें ये सब लिखा हो स्क्यू के बारे में एंड ऑल दैट? नो, आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है? आपका प्रीवियस जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का जो किताब है आप वहीं से देखिए। ऐसा नहीं है कि आपको एनोमली में ही जाकर देखना है। अच्छा, ओके सर, ठीक है? What you have to do in anomaly detection, what not to do, where to apply the formula, where not to apply the formula, that I will tell you. But you go through a revision today. I have given one project, I have given today. Tomorrow the first topic is going to be this anomaly detection topic, and after that I will continue with the second project. Okay, I will continue with the second project. But whatever topics I told today, have a look at that. Otherwise it is getting some difficulty. I can understand, Darshan, you can understand, okay, Rohit can understand, lots of students are there who can understand, okay, but some might not understand at all. So that is not going to be a generic task, or it's feasible. It's not going to be feasible. Okay, वो सही नहीं होगा. That's why I'm telling. Okay, so don't worry, have patience. अभी तक इतना कुछ क्लियर हुआ है, ये भी क्लियर होगा, ठीक है? चलो सबसे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, अटेंडेंस ले लेते हैं। Okay, just a second. Now, okay, wait. Okay, Anusha Bera. Yes, sir. Yeah. Zayed Siddiqui नहीं है। श्रेष्ठा पोद्दार, श्रेष्ठा पोद्दार, Present, sir. ओके, ঠিক আছে। সৃষ্টি ঘোষ, Present, sir. Present. ओके। आदित्य नारायण प्रेजेंट है। भावातोष प्रेजेंट है। बुधा प्रेजेंट सर। ओके। देवज्योति शाह प्रेजेंट। देवपम दास प्रेजेंट। दीपी रंजन इज प्रेजेंट। ईमान कल्याण महतो एब्सेंट है। कौशिक देवनाथ
कौशिक देवनाथ, ओके। प्रतीक सेठ एब्सेंट है, ओके। प्रतीक्षा घोष प्रेजेंट, ओके। प्रत्यय प्रेजेंट, प्रयास Yes, sir. ऋषिन हलदार प्रेजेंट, रोहिश रे प्रेजेंट, ओके। रूपम सरकार प्रेजेंट আছে, সঞ্চিতা দত্ত প্রেজেন্ট আছে, সপ্তশ্রী সেন আছে কি? সপ্তশ্রী সেন নেই, अच्छा। शायन चक्रवर्ती शेफालिका प्रेजेंट है, या ठीक है। शुभम चौधरी प्रेजेंट सर। शुभम चौधरी प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट सर। अच्छा, सुमन ठाकुर है, ओके ओके, यस सुमन प्रेजेंट। सुमन ठाकुर है, सुमन ठाकुर हाँ, संचिता प्रेजेंट আছে, संचिता प्रेजेंट আছে, सुमन ठाकुर নেই। আচ্ছা, सूर्यदीप रॉय আছে, सूर्यदीप रॉय নেই। ত্রিদীপ্ত আছে, ত্রিদীপ্ত আছে, अच्छा। आकाश चैटर्जी प्रेजेंट আছে, आनंद मोहन झा प्रेजेंट है, अंगना दास प्रेजेंट, अनिकेत मिश्रा प्रेजेंट, यस सर। अरिंदम सिंह यस सर। प्रेजेंट, या प्रेजेंट। अरविंद कुमार मिश्रा प्रेजेंट, आयुष मिलन प्रेजेंट है, बिलाल अहमद प्रेजेंट, sir. दर्शन प्रेजेंट, या गार्गी प्रेजेंट, गार्गी जीत साहा प्रेजेंट, गार्गी प्रेजेंट আছে না অ্যাবসেন্ট আছে? Tommy जीत साहा present. प्रेजेंट, जीत साहा प्रेजेंट है, अच्छा। मेघा पॉल प्रेजेंट, मोहित सहल एब्सेंट है, निखिल कुमार प्रेजेंट, पंकज Yes, sir. घोष प्रेजेंट, प्रभा प्रेजेंट, राकेश रोशन है, राकेश रोशन यस सर। प्रेजेंट सर। ओके प्रेजेंट, रेशमी प्रेजेंट, रोहित पॉल प्रेजेंट, Hello sir, present sir. हाँ। संजना रानी है, अच्छा। प्रतीक सेठ प्रेजेंट है, रुकिए, प्रतीक अभी लास्ट में बोलिएगा, वेट प्रतीक वेट, अच्छा। संजना रानी नहीं, अच्छा। सप्तर्षि कुंडू नहीं, सप्तर्षि कुंडू আছে, सप्तर्षि रॉय नहीं, शायनबाग प्रेजेंट सर। शानबाग। ओके, शाइनी घोष Present, sir. Shiny Ghosh. ओके ओके। श्रेय कुमार बर्नवाल एब्सेंट है, सिमरन कुमारी प्रेजेंट, स्नेहा गोस्वामी प्रेजेंट, Yes, sir, present. Sneha question. ओके। श्रुति सामंत Present, sir. Present, sir. सौरभ बाग श्रुति सामंत प्रेजेंट, अच्छा। सुभाषिस पॉल प्रेजेंट, सर। ओके। सुमित कुमार Present sir. Present सूरज sir. माइती, यस सर। ओके। सूरज माइती प्रेजेंट, सुमित कुमार प्रेजेंट, सूरज माइती प्रेजेंट, अच्छा। वरदान सासोत, अच्छा। रिद्धिमान घोष प्रेजेंट सर। ओके ठीक है, चलिए अब एक करके। सर भवतो अच्छा, सरकार ठीक है। प्रेजेंट। अभी कौन है? प्रतीक सेठ, वेट। सर भवतो सरकार। प्रतीक सेठ प्रेजेंट আছে, ভবত সরকার তুমি প্রেজেন্ট আছো গো। ঠিক আছে স্যার।
ঋদ্ধিমান ঘোষ প্রেজেন্ট আছো তুমি? আরো কেউ আছে? ইজ देयर এনিবডি? समी बिलाल अहमद हाँ बोलिए सिमरन कुमारी देख लेते हैं। স্যার পঙ্কজ ঘোষ দিয়েছেন। सिमरन Sir, Sanjana Rani, I am also present, sir. पंकज घोष सिमरन कुमारी आप एवरीडे प्रेजेंट है। सिमरन कुमारी হ্যালো স্যার। Sir, Sanjana Rani. एक एक करके हेलो। यस पंकज घोष হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ पंकज घोष তুমি তো প্রেজেন্ট আছো, তুমি তো সব দিন প্রেজেন্ট আছো। আচ্ছা আচ্ছা স্যার। স্যার প্রভাত কুমার। प्रभात कुमार आप प्रेजेंट हैं? सर बिलाल अहमद बिलाल अहमद वेट बिलाल अहमद आप प्रेजेंट हो? ओके सर थैंक यू वेरी मच या वेलकम। Sanjana Rani. एनीबॉडी एल्स? Sir, और कोई I है? am also present, sir. नाम बोलिए। अच्छा संजना रानी वेट संजना रानी संजना रानी यहाँ पर देखिएगा एब्सेंट हो गया है। प्रेजेंट हाँ ठीक है। आप फर्स्ट हाफ में थे? फर्स्ट हाफ में शायद आप नहीं थे। Yes, sir, I am also present. You was present in first half? Yes, sir. ओके चलो ठीक है डन। एनीबॉडी एल्स? और कोई है? Sir, Sneha Goswami. Sir, Sneha Goswami. Present. स्नेहा गोस्वामी दाड़ाओ स्नेहा वेट स्नेहा गोस्वामी ए তুমি সব দিনই প্রেজেন্ট আছো স্নেহা। Okay, sir. Thank you. ओके चलो दैट्स इट। और कोई डाउट है? एनी डाउट टुडे? हेलो एवरीबॉडी एनी डाउट? हेलो नो प्रॉब्लम ना? अच्छा चलो ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द थिंग आई थिंक वी हैव डन अ लॉट ऑफ टास्क टुडे। Okay, we have done a lot of things. Tomorrow again I will go for one project. Okay, don't worry. फिर से एक project करेंगे हम लोग, ठीक है? And then we will first we will continue with our what to say anomaly detection part, and then we will go for our project. ठीक है? चलो ठीक है. Okay. হ্যালো স্যার। Yes. স্যার সূর্যাদীপ রায় প্রেজেন্ট স্যার দিয়েছিলেন। এই দেখলে আমি এই জন্যই জিজ্ঞেস করছিলাম বারবার। দাঁড়া ওয়েট করো দেখছি দাঁড়া। হ্যাঁ স্যার এই তো খেয়াল দাঁড়া सूर्यदीप दाड़ा वेट सूर्यदीप रॉय तो হ্যাঁ সূর্যাদীপ রায় सूर्यदीप रॉय না অ্যাবসেন্ট আছে দাঁড়াও হ্যাঁ স্যার ছিলাম আছি স্যার প্রেজেন্ট হয়েছে আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন বললে না তুমি ঠিক আছে তাই জন্য অ্যাবসেন্ট করে দিলাম চলো এখন প্রেজেন্ট করে দিয়েছি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে হ্যাঁ চলো এটা ঠিক হয়ে আছে ঠিক আছে চলো ওকে টেক কেয়ার অফ योरसेल्फ एवरीबॉडी चलो लेट्स मीट टुमारो अगेन हाँ चलो
Yes, Akash. Sir, as actually my net Given was attendance given attendance given. No problem. okay, sir. Actually, Don't worry. I was facing some network problems, so I left. No problem. I can understand. See, I saw that you were in the class. Okay, that's why I gave your attendance. Don't worry.